Assalamu alaikum students. Now we will move to the next lecture of international finance, and the overview of the previous lecture I'm going to discuss that with you. We discussed the international business opportunities available in the world, and we also discussed that different countries having their existence in different regions. So those regions basically try to facilitate those countries. Like for example, if Pakistan is in Asia, so Asian economies would like Pakistan to have their business in international grounds. Similarly, like we discussed in Europe, that European Union has been established. Why it was established? Because European Union thought that they should have a group of countries from Europe to facilitate यूरोपियन कंट्रीज. अगर वो यूरोप में एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे यूरोपियन कंट्रीज का और उनको एक सेम करेंसी इंट्रोड्यूस करा के देंगे जो उन्होंने 99 में इंट्रोड्यूस कराई, विच वाज यूरोस. सो व्हाट विल हैपन कि इस इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी से फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर चेंज हो जाएगा और कंट्रीज, वो यूरोपियन कंट्रीज जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, विल नॉट फेस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रीस और इटली आपस में बिजनेस कर रहे हैं इन यूरोप और दोनों की करेंसी सेम है जो कि यूरो है, सो ऑब्वियसली इन दोनों कंट्रीज के लिए ये बहुत इजी है कि वो आपस में ट्रेड करें. इन दैट वे दे आर बेसिकली एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस व्हाइल हैविंग द सेम करेंसी टू अवॉइड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. We also discussed that in 1990s, countries, before that time, countries used to avoid getting internationalization in their businesses. However, after 1990, countries started to think that they have to liberalize on the international business grounds to promote their economic growth. Developed economies moved quite fast, while underdeveloped countries tried to keep their pace very slow because they were hesitant to do so. In Asia, in the end of 1990s, 97 to 99, Asian economies faced a very major financial crisis. The economies were hit badly, and the major economies those were hit by the financial crisis were Malaysia, Indonesia and Thailand. So when you are opening up your borders, when you are liberalizing your financial system or your international trade or international finance, the most important thing is that you should also follow the regulations made by other countries and made by your countries to move with the swift form. Then after discussing this, we also discussed two different types of models to value multinational corporations. And in that regard, first model was domestic model and the other one was international model. In domestic model, as we discussed, the two main components to consider were, first of all, since the example was from United States, so the currency mode was only dollars, and T is the time where you think that 0 to T means that 0 to, if you are considering your business cash flows in next 10 years, so it will be 0 to 10 years. So that was the difference. That was the main point for domestic type of cash flows in valuation models of MNCs. Now, when we moved on to the international model of MNCs for the valuation, so there was another factor which we had discussed, that was the expected cash flow, which involved the exchange rate. If, for example, your country is doing business with America, so obviously two currencies are involved, Pak rupees and dollar. So when you are valuing your multinational in terms of international business, so you have to focus the currency also. Since your country is exposed to exchange rate risk, so obviously that formula captures the exchange rate also in it. So the valuation of multinational company would be involving exchange rate also. In domestic model, we will be focusing on only one currency because your company is having their business in that country or that single country. However, in international business, your company is having their businesses in other countries where you have to focus on the exchange rate. We also discussed different types of MNC's cash flows. First, we discussed the MNC's cash flow in terms of international trade, where we said that fine, the company is doing their business on the conservative method of international business, that is international trade, where only importing and exporting is the main concern.
So in that phase, what will be the cash flow? In that scenario, the cash flow will involve आपकी जो incomes आ रही हैं through exports और जो outflows हो रहे हैं through imports. So अगर आप international trade सिर्फ follow कर रहे हैं, in that case आपकी company की cash flow involve करेगी सिर्फ वो incomes जो कि आपकी exports से आ रही हैं और वो payments जो आप imports पर pay कर रहे हैं. Second model which we discussed was where the company was having international trade along with international agreements. Now what is the difference between international trade and international agreement? International trade basically focus only on the conservative way of importing and exporting, while international agreements involve licensing, franchising and joint ventures. So the second phase, if you are focusing on the cash flow of that firm where they are having international transactions, not only on international trade but also on the basis of international agreements. So in that regard, your cash flow will be part of where either you are having the cash outflow and inflow for the international trade where you are getting payments against आपकी exports के और या फिर जो आप payments कर रहे हैं against your imports. On the other hand, second part of the cash flow was जहां पे आप trade agreements को involve कर रहे हैं. Trade agreements क्या होंगे? जिसमें आप joint venture, franchising और आपके दूसरी फॉर्म्स जो एग्रीमेंट की लाइसेंसिंग की है उसकी फॉर्म में आपको कोई फी पे करनी पड़ती है फॉर दैट एग्रीमेंट. कैश फ्लो कैसे चेंज होगी कि एक पार्ट में आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की रिसीविंग्स और पेमेंट्स आएंगी, सेकंड पार्ट में आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स की फी पेमेंट्स और फी रिसीव्ड्स आएंगी. सो आपकी जो टोटल कैश फ्लो बनेगी वो दो पार्ट्स में है, वन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, ऑन द अदर पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर international trade. Finally, we discussed another cash flow form for your international business in which there is another part which is included other than international trade, international agreement, that was direct foreign इन्वेस्टमेंट. तो अगर आपके पास एक कैश फ्लो है जिसमें आपके पास डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हो रहे हैं उसके थ्रू, तो आपकी जो टोटल कैश फ्लो बनेगी उस कंपनी की जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी है और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, तो कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज डिफरेंट फॉर्म्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे. We also discussed when you are sure about your cash flows, so then the time comes when you should know how to record these transactions. To record these transactions, we came to know that balance of payment is the method by which you can record the accounting transactions of your international business. Now your balance of payment consists of many parts, but the most important parts are 1. Current account, 2. Capital account. Current account की further subdivision है जिसमें आपके पास balance of trade, factor income और transfer payments involve होती हैं. Capital account basically record करता है flow of funds from one country to the other, and the major categories in capital account are 1. Direct foreign investment, portfolio investment or capital investment. We will discuss these all categories either in capital account or current account in detail in this lecture. One more thing we have said that trade volume can be different from one country to the other. And overall the world is developing towards international business. Either the closed economies or the open economies all have accepted that internationalization is important for their economic growth. Now let's move on to your next lecture, which is international flow of funds. And the objectives are, first thing, we have to discuss in detail the components of balance of payment which involve current and capital account, but the subcategories of these accounts should be discussed in this lecture. To explain how the international flow of fund is influenced by economic and other factors, which is an important criteria, in this lecture we will also discuss that how economic factors can have an impact over the international business. Now the key components of current account we are discussing. Now keep in your mind that this is the first category where we are discussing the current account, not the capital account. What are the components of current account? First thing, balance of trade. Now what does balance of trade means?
It captures simply the difference between exports and imports. Merchandise trade involves the exports and imports of tangible products. So when you are focusing on balance of trade, simply say for example मैं आपसे कह दूं कि आप पाकिस्तान का balance of trade बता दें. So what your job is कि आपने simply difference देखना है पाकिस्तान की imports की value और exports की value में. That is your balance of trade. Obviously अगर आपकी exports ज़्यादा होंगी तो आपका balance of trade plus में जाएगा. अगर आपकी imports ज़्यादा हैं तो balance of trade आपका negative value show करेगा, which in other words shows the deficit of trade. So obviously every country prefers that they should have more exports than imports. Merchandise trade involves the exports and imports of tangible goods. So tangible goods are those, in simple words, those products which you can see and touch are the tangible products. Now considering this in another way, intangible assets क्या होंगे? तो जो आपके financial assets हैं, say for example आपकी securities हैं, आपके bonds हैं, these are intangible assets. और other financial assets, derivatives हैं, options हैं, ये सब आपके intangible assets होते हैं. Merchandise trade involves only those assets who are basically tangible products. तो जितनी भी products की imports और exports हो रही हैं, they will come under the category of tangible products. Service trade represents the tourism and other products like insurance, legal and consultancy. अच्छा जी, जब न्यूली इंटरनेशनल बिजनेस लॉन्च हुआ इन द वर्ल्ड एंड कंट्रीज स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स इट, तो उस वक्त सिर्फ मर्चेंडाइज ट्रेडिंग जो थी उसको फोकस किया जाता था, बिकॉज इट वाज नॉट इन देयर माइंड कि सर्विसेज भी ट्रेड हो सकती हैं. आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे मैच्योर्ड ऑन देयर गुड्स प्रोडक्ट्स और द मर्चेंडाइजिंग, देन दे कंसिडर दैट सर्विसेज इज समथिंग ऑन विच दे कैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. How you can import or export services? Tourism. Say for example, someone is coming for tourism in Pakistan, so obviously you are exporting something and you are getting benefit of a currency from that country to Pakistan. Anyone coming from US to Pakistan will bring dollars in Pakistan and will convert it in rupees. So obviously आपके पास benefit है क्योंकि आप services provide कर रहे हैं, आप product नहीं provide कर रहे. Second thing, insurance, legal, consultancy. These are all those things which comes under the category of services, and if you are providing those services, so you are basically going to export them. And if you are taking the benefit of these services from other country, तो वो आपकी import of services हैं. Say for example, आप अपने call centers को चलाने के लिए Indian किसी company से एडवाइस लेते हैं या फिर अपने कॉल सेंटर्स में एडवाइस के लिए इंडियन पर्सनल को हायर कर लेते हैं कि बिकॉज दे हैव मोर एक्सपर्टीज इन देयर आईटी सेक्टर. इन दैट केस बेसिकली यू आर इम्पोर्टिंग द सर्विसेज ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स एंड यू हैव टू पे फॉर दैट. तो वो सर्विसेज तो इम्पोर्ट हो रही हैं इन पाकिस्तान, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट्स देनी है. सो दैट विल बी कैश आउटफ्लो अगेंस्ट दोज इम्पोर्ट सर्विसेज. A deficit in the balance of trade shows that the value of goods and services exported is less than the value of imported goods and services. Say for example, Pakistan, we are importing a lot of machinery and a lot of computer equipment from China, America and European countries, while on the other hand Pakistan की जो exports हैं, जो cotton industry है या कोई any other specialization of Pakistan, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि बीट कर सके एक्सपोर्ट्स की आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यूज़ को. तो उसमें क्या है कि बेसिकली आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान को मशीनरी की, इक्विपमेंट की, कार्स की, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है इंपोर्ट करने की. आपकी इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू, वो आपकी एक्सपोर्ट्स से कहीं ज़्यादा है. व्हाट विल हैपन? अगर आप इंपोर्ट तो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कार्स कर रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स कर रहे हैं, while on the other hand आप उसी कंट्री को या किसी अदर कंट्री को व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज नो मैच बिटवीन दीज टू. डिपेंड्स की वैल्यू कितनी है. सो उसमें आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा आएगी रादर देन योर एक्सपोर्ट्स. अगर आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सपोर्ट्स की वैल्यू से ज्यादा है, सो दैट मीन्स ट्रेड डेफिसिट है.
Before 1990s, the balance of trade focused on merchandising. As I discussed earlier, in 1990s and before that, usually the countries focused on the products trade, that they used to trade in terms of products rather than services. So merchandising was the main focus. Afterwards, they included services too, and then they came to know that it's not only the products which we can specialize in, और हम किसी product में सिर्फ specialize करें और किसी दूसरे country को export करें, while there are other things which can be, say for example, services in IT, services in legal consultancy, and services in any other sector, we can also export that. So that is another benefit to the economy, is that now not only you can trade in goods, but you can also trade in terms of services. And they are also called the normal trade functions, where you export the services or import the services. तो इधर या तो आप अपनी services export कर रहे हैं या import कर रहे हैं. So it's not necessary कि आप सिर्फ products को export या import करें, but आप अपने services को भी export और import कर सकते हैं. जी, the next part is factor income, that represents the inflow and outflows of income, interest and dividend. So now we are not focusing on only merchandising, since we said current account basically record the transaction. So in that case, we are basically trying to represent the inflow and outflow of income. Say for example, आपने financial assets लिए हैं, अगर आप bonds लेते हैं, in terms of that you have to get, either you will get interest or you will pay interest. अगर आपने किसी country में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स में या फिर उनकी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. अगर आपने बॉन्ड खरीदे हैं, व्हाट विल हैपन, यू विल गेट इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो आपके पास इनकम कैश इनफ्लो में आ रहा है. अगर आपने सेल किए हैं बॉन्ड्स, सो इन दैट केस आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और कैश आउटफ्लो में जाएगा. So when we are discussing factor income, so these are the inflows and outflows of income in terms of interest and dividends. So there is a difference between interest and dividend. One thing, interest is applied on bonds, while dividend is applied on securities. So dividend will be paid to the shareholders. So whether you have bought bonds or shares in any country, or you have sold bond or shares in any country, so the cash inflow and outflow will be recorded under the head of factor income. Factor income received by investor of any countries is basically the inflow of funds. तो अगर तो आपने receive करने हैं funds from any other country due to the factor income, that will be counted as your cash inflow or inflow of funds. However, if the factor income paid by any country is the outflow of cash for that particular country, तो अगर तो आपने payments करनी है, so that will cause a cash outflow. But only on the basis of we are discussing the factor income, which record the income transactions of any country to the other country, and that there can be an example of bonds and shareholdings. Third category is transfer payments, which involve aids, like if your country is giving aid to the other country, so obviously this is something which you cannot ignore, and it is not something कि आप उसको record ही ना करें, since आपका country किसी और country को aid provide कर रहा है. In that regard, that foreign aid must be recorded at the end of the year, or whatever your time span is when you are trying to record your transactions. Aids must be recorded because cash outflow हुआ है from the country, so that must be recorded. Then comes gifts. For example, आपका country दूसरे country को gift देता है. In that case, cash outflow तो है, and then you have to record it. Finally, if you are giving grants to other countries, so obviously they will also be recorded in transactions, so you cannot avoid them. So they must be part of your cash outflows, either you are giving aids, gifts or grants, but at the end of the period you have to record them in your cash flows, because you are giving these things to the other country, and these are the cash outflows from your country to the other country. Similarly, if you are getting aids, gifts
or grants from any other country, so you must record them in your basically cash flows. Why? Because these are something which are cash inflows for your economy and you cannot basically ignore them. So you must record them in your cash inflows. Now this is an example of US current account in 2003, and keep it in your mind that all the transactions are in terms of billions of dollars. Now you can see these are the first part of the table is US exports of the goods. So whatever US export कर रहा है in terms of goods, merchandising, तो सारी amount जो कि US के पास in terms of exports आ रही है वो आपकी फर्स्ट फिगर है, दैट इज $712 बिलियन. वी आर पुटिंग अ प्लस साइन विद दैट बिकॉज आपके कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, आपके पास पेमेंट रिसीव हो रही है और ये आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. एज वी डिस्कस्ड कि आपके पास जब पेमेंट रिसीव होगी तो वो आपके पास क्रेडिट होगी. जब आपके पास पेमेंट क्रेडिट होती है, यू पुट अ प्लस साइन विद दैट सिंस समथिंग इज कमिंग इन योर अकाउंट. Second is, as we discussed, merchandising is not something which is only a basic focus for the international trade. Now, countries are also focusing on international services, and international services are also traded. In that regard, in this example, US current account is credited with $292 billion in this particular year, for which US ने रिसीव किए हैं अमाउंट्स और कैश इनफ्लो हुआ है अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. सो फर्स्ट पार्ट आपका आ रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसकी इनकम आपके पास आ रही है प्लस $712 बिलियन इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. सेकेंड आपके पास यूएस एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आ रहा है जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट्स रिसीव किए हैं, दैट इज $292 बिलियन. थर्ड वन which we cannot ignore, as I said, US income receipts, that is $275, and you should add them up to finally get the income receipts of income. So finally आपके पास 1279 की फिगर आ रही है. These are in billions of dollars. So $1279 billion US has received as cash inflows against their export of goods, export of services and net income receipts. So ये तो आपकी अमाउंट हो गई जो कि यूएस ने रिसीव की है इन 2003 और ये उनके कैश इनफ्लोज हैं. नाउ लेट्स सी हाउ मच outflows has been made by US in their cash flows. ये फिगर्स आपके पेमेंट्स के फिगर्स हैं जो यूएस ने पे किए हैं अमाउंट्स टू अदर कंट्रीज अगेंस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 5 को आप फोकस करेंगे. नंबर 5 यूएस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. तो अगर इंपोर्ट किया है अमेरिका ने कोई प्रोडक्ट या कोई मर्चेंडाइजिंग की है, सो इन दैट केस $1263 बिलियन दे हैव पेड अगेंस्ट दैट. तो क्योंकि ये आउटफ्लो है कैश का, इट विल कम विद द साइन ऑफ माइनस प्लस इट विल बी कंसिडर्ड एज डेबिटिंग ऑफ योर अकाउंट. सो आपका अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा विद माइनस $1263 बिलियन. In this example, US का अकाउंट $1263 बिलियन के साथ डेबिट कर दिया गया. And that was only on the basis of products or goods import के जो कि अमेरिका ने या US ने इंपोर्ट किए हैं in 2003. Second category is imports of services made by US. उस केस में आपने देखना है कि $246 बिलियन के सर्विसेज यूएस इकोनॉमी ने इंपोर्ट किए हैं अगेंस्ट विच दे हैव पेड समथिंग दैट इज $246 बिलियन और वो आपके कैश फ्लो से आउटफ्लो में काउंट होंगे और $246 बिलियन के साथ आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा. एंड अगेन माइनस साइन विल कम विद दैट. नंबर 7 पे आप देखें, that is US income payments. So these are the income payments which US has made and these are for $259 billion जो कि US ने दूसरी इकोनॉमीज को in terms of income payments की हैं. Now considering both parts, first thing is total US exports and income receipt which is number 4.
आप टोटल अमाउंट देखें तो दैट इज $1,279. These figures are in billions of dollars. Second thing, now you focus on number 8. Total US imports and income payments are equal to $1,768 billion. Just focus on these two figures, number 4 और number 8 को focus करें. Number 4 आपकी income receipts हैं in USA in the year 2003. Number 8 आपकी total US imports and income payments हैं, that is $1,768 billion. So clearly it is seen कि number 8 is greater than number 4. तो number 4 जो है वो आपकी cash inflows हैं, number 8 cash outflows हैं. In this particular example, cash outflows cash inflows से ज्यादा हैं. Net transfers by US जो कि US economy ने की हैं, they are minus $68 billion in the form of anything which we have discussed in our previous slides. So ये भी आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है. So that will also be taken as जो कि credited amount है, debited account है from your total cash flow. So total impact US cash flow पे क्या होगा? Current account number 4 as I said जो कि आपके cash inflows हैं, minus cash outflows जो नंबर 8 है, माइनस net transfers by US economies जो कि नंबर 9 है. फाइनली आप अगर 1279 में से 1768 को माइनस कर दें और फिर उसमें से -$68 billion को फर्दर माइनस कर दें, सो द अमाउंट इन द एंड फॉर द US कैश फ्लो इज -$557 billion. करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है आपका. फाइनल अमाउंट -$557 billion आ रही है, विच सेज कि आपके पास कैश आउटफ्लो ज्यादा हैं, आपके पास फिगर्स नेगेटिव में जा रही हैं और डेफिसिट आ रहा है. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. अभी तक हमने डिस्कस की और बात की कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट्स. नाउ वी विल टच द अदर कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वेयर वी डिस्कस्ड कि आपके पास फर्दर कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट के क्या हो सकते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट है. वन इज करंट अकाउंट जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसके फर्दर 3 कैटेगरीज डिस्कस की. नाउ वी आर गोइंग टू द अदर पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि आपके पास कैपिटल अकाउंट है, और अब हम सब कैटेगरीज ऑफ कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे. डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इट अर्लियर कि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इन एनी फॉरेन इकोनॉमी विल बी कंसिडर्ड एज योर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सेकेंड थिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. Obviously, you are doing it to have your businesses. It includes firms' acquisition of the foreign companies. So, अगर तो आपकी कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में एक्विजिशन कर रही है, टोटल कंट्रोल ले रही है उस कंपनी का, so it will come under the head of direct foreign investment because आपकी कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है किसी फॉरेन कंट्री में, and it will be part of your direct foreign investment. If you are trying to construct new plants for manufacturing in any other foreign country, so वो भी आपके direct foreign investment में count होगा, क्योंकि आप एक नया manufacturing plant लगा रहे हैं which is a fixed asset. So वो आपके category जो involve होगी, जो सब category जिसमें है, that is direct foreign investment. You can also expand your business or existing plant इन द फॉरेन कंट्री. आपके पास एक प्लांट अवेलेबल है किसी फॉरेन कंट्री में, लेकिन उसका साइज उतना नहीं है जितने आपको रिक्वायर्ड है, एंड यू वांट टू एक्सपैंड. इन दैट केस जो एक्सपेंशन आप कर रहे हैं इन एनी फॉरेन कंट्री, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नाउ द अदर कंपोनेंट, अभी तक हमने बात की उन इन्वेस्टमेंट की जो कि फिक्स एसेट में होते हैं, और वो आपके बेसिकली डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट काउंट होती है. एनी इन्वेस्टमेंट इन fixed asset in any other country will come under the head of direct foreign investment. Let's talk about portfolio investment. As I told you, portfolio is blend of investments. It represents the long-term transactions of financial assets. The first category involves
फिक्स्ड एसेट वेयर वी डिस्कस्ड कि आपके बिल्डिंग्स हैं, आपके इक्विपमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग इंक्रीज कर रही है, आपका सेटअप इंक्रीज कर रहा है, आप एक्विजिशंस करना चाह रहे हैं नेक्स्ट कंट्री में जाके. दीज आर ऑल कमिंग अंडर द हेड ऑफ DFIs or direct foreign investment. Considering the portfolio investment, what is the difference? One thing, portfolio investment is based on long-term transactions. Second thing, these long-term transactions are in terms of financial assets. So when you discuss financial assets, so these are intangible assets and these are not something which are merchandising. This can involve bonds or stocks, which are your financial assets. So if your country is investing in foreign countries in their bonds or stocks, so that is basically a trade of financial assets but in terms of portfolio investment, like purchasing a Netherlands stock of company ABC by US investor. US investor Netherlands का stock purchase करे, so that will come under the head of portfolio investment in your capital account. Without changing control of the company, obviously a Netherlands में investment हो रही है by US investor, so US investor is not going to control the functions of Netherlands company. So you are not disturbing any control of that particular company. So that will come, आपकी simple investment है in any other country जो कि आपने bonds में या stocks में की हुई है, but जब आप उसकी record करेंगे, उन transactions को record करने के लिए capital account के अंदर जो head आता है portfolio investment का, you will record your transaction under that head. On the other hand, अगर US firm purchase all stocks of company ABC in acquisition, so that is direct foreign investment. So अगर US firm सारे के सारे stocks purchase कर ले from company ABC और acquire कर ले उस company को, then you will not record these transactions under the head of portfolio investment, क्योंकि उस केस में सारा control US investor के पास आ रहा है, क्योंकि आपने acquisition कर ली है, और that will come under the head of direct foreign investment. Because आप कंट्रोल ले रहे हैं और आप पूरा का पूरा स्टॉक्स एंड इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं या फिर आप उसको एक्वायर कर रहे हैं, सो इन दैट केस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बट इट विल कम अंडर द हेड ऑफ योर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, since it involves the control and transfer of control. Now the other investment criteria or the other component of the capital account is capital investment. Now what is the difference between capital investment and portfolio investment? Let's see. The transaction involves short-term financial assets. As we discussed, in portfolio management or portfolio investment, you involve those securities or bonds which have long-term transactions time, so you are considering them under the head of portfolio investment. However, if your country is investing in another country on short term basis, या आप कह लें कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है इन US इन देयर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स हैं, और शॉर्ट टर्म लिमिट क्या है कि आपकी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स की, दे आर लेस देन 1 ईयर. अगर तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर US सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है, वो सिक्योरिटीज जो कि जिनकी मैच्योरिटी या जिन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द हेड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. उन ट्रांजैक्शंस को आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स. हाउएवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर शॉर्ट टर्म transactions and they are less than 1 year, and when you consider less than 1 year, so they come as the money market instruments. So they will deal with financial instruments which are money market instruments. Developed countries heavily rely on trade and they basically conduct both types of transactions, whether they are capital investment or portfolio investment. So these were the categories of the capital account, where we have seen that either you are going for DFI, or you are going for the capital investment, or you are going for the any portfolio investment, and we have discussed in detail that how you can differentiate them, whether you are dealing in short-term basis, you are investing in long-term basis, or you are basically investing in
fixed asset. So all those categories should be different from one another, and when you are recording your transactions, so the cash flow would be different, and you should record in your capital accounts in the proper categories. Now let's discuss the international trade flows. Some countries are more dependent on trade than others. The trade volume of a European country typically is between 30 to 40% of its GDP. जीडीपी को हम क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए या उसकी डेवलपमेंट को चेक करने के लिए वी कंसिडर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो अगर आपने किसी भी एलिमेंट को या किसी भी फैक्टर को किसी कंट्री के मेजर करना है या फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, सो यूजुअली आप उसको उसके जीडीपी से कंसिडर करते हैं. सो इन दिस केस ट्रेड वॉल्यूम को आप देख रहे हैं कि आपकी कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम जीडीपी के कितने परसेंट है. In that case, the trade volume of European economies, which is discussed here first of all, is 30 to 40% of the GDP. कि 30 to 40% GDP को contribute कर रहा है trade volume. While trade volume of US or Japan is typically between 10 to 20% of its GDP. So trade volume can be different of one country to the other. The volume of trade has grown over time for most of the countries. As we discussed कि after 1990s countries has observed कि अगर वो develop नहीं होंगे in international markets, so they can't achieve targets on their economic growth. जब countries realize कर लेंगे that they have to follow the internationalization, they have to follow international regulations, and they have to move on with their international trade, then obviously they will also focus on their trade volumes. Those economies who are reluctant, so they have low trade volumes in Asian economies, while those countries who have adopted their trade, international trade, they have huge trade volumes. So volume जो basically है in terms of their GDP represents. The volume of trade has grown over the time for most of the countries. So mostly countries ने अपनी international trade को increase किया है since they have observed कि अगर उन्हें international markets में move करना है, so they have to move with their trade volume and they have to start or open up their borders for international trade. So in this slide we have seen that in European countries, their trade volume is between 30 to 40%. However, in US or Japan, their trade volume is 10 to 20% of their GDP. In this slide, we are basically discussing the distribution of US exports across countries in billions of dollars. Let's have a closer look to this picture. First thing, what are you considering in terms of Canada? How much exports are being made by US economies in billions of dollars to Canada? In your leftmost column, Canada is on the top. Left side पे सबसे top में Canada को focus करें. That is, Canada has 170 figure which represent the distribution, that is exports to Canadian economy from US economy. तो अमेरिका ने या यूएस ने 170 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स किए टू कनाडा. Underneath there is Mexico, which gives you the figure of 97 billion dollars. तो यूएस ने एक्सपोर्ट्स किए हैं 97 बिलियन डॉलर्स के इन मैक्सिको और टू मैक्सिको. तो यूएस ने अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट किए हैं टू मैक्सिको फॉर द वैल्यू ऑफ 97 बिलियन डॉलर्स. लेट्स मूव ऑन टू द यूरोपियन रीजन, जो कि आपका सेकंड कॉलम में आ रहा है. यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखें तो स्वीडन को 3 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स किए हैं अमेरिकन इकोनॉमी ने. डेनमार्क को 2 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स किए हैं अमेरिकन इकोनॉमी ने. स्पेन जो कि बॉटम में आ रहा है इन डार्क ग्रीन एरिया, एंड यू कैन सी कि स्पेन को 6 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स किए हैं अमेरिकन इकोनॉमी ने, एंड टर्की को 1 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स हुए हैं. Let's move on to the right side of the figure, which is basically focusing more on their eastern economies and the Australian economies. So Pakistan में 1 बिलियन डॉलर के
एक्सपोर्ट्स किए हैं अमेरिकन इकोनॉमी ने। रशिया में $3 बिलियन एक्सपोर्ट हुई हैं। साउथ कोरिया में $24 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए हैं यूएस इकोनॉमी ने। इन ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बॉटम पार्ट है आपकी डायग्राम में राइट मोस्ट कॉर्नर में, ऑस्ट्रेलिया में $13 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हुए हैं। इस स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को कंपेयर किया गया है। टॉप पार्ट जो डायग्राम का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स को, बॉटम पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स को। सो द टॉप पार्ट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल how much exports have been made by US economy to all these countries which are part of this pie chart. So total trade का 2.39% फ्रांस को एक्सपोर्ट किया है, टोटल एक्सपोर्ट्स का। यूनाइटेड किंगडम को 4.75% एक्सपोर्ट्स हुई हैं। The major portion you can see in this diagram in terms of exports is going to Canada. कनाडा में 23.78% टोटल एक्सपोर्ट्स का गया है, दैट इज द 24%, ऑलमोस्ट राउंड फिगर्स जो आपकी आ रही हैं दैट इज 24%। सो कनाडा में आपकी एक्सपोर्ट्स 24% की हुई हैं फ्रॉम यूएस इकोनॉमी। जर्मनी 4%, जापान 7.29%, चाइना 3.98%, Mexico 13.65%. So these are the figures who are basically contributing the part of exports from US economy to the other countries. Let's discuss the bottom part of this diagram where distribution of imports discuss की गई है। टॉप पार्ट में आपके एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी में, बॉटम पार्ट में आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स आ रही है कि कितनी इंपोर्ट्स हुई हैं इन यूएस इकोनॉमी। सो यू कैन सी मेजर इंपोर्ट्स जो आ रही हैं वो हैं फ्रॉम कनाडा 17.75%, जर्मनी 5.39%, जापान 9.35% एंड चाइना से इंपोर्ट्स हो रहे हैं 12.05% के। इफ यू कंपेयर बोथ द फैक्टर्स जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स हैं, सो यू कैन सी अमेरिकन या यूएस इकोनॉमी ने एक्सपोर्ट्स में जो मेजर चेंजेस ला रही हैं उनमें चाइना, जापान और कनाडा इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा से आपकी एक्सपोर्ट्स 23.78% हैं जबकि आपकी इंपोर्ट 17.75% है, विच आर लोअर देन योर एक्सपोर्ट्स। Similarly, you can compare the facts about China, which is your imports are 12.07% of your total imports, while your imports from China, your exports from China are 3.98%. So there is a huge difference between the figures, and these are majorly creating a difference between imports and exports. So by using these types of criterias or pie charts, आप imports और exports का difference check कर सकते हैं on considering these graphs, and you can discuss कि आपके imports और exports में किन major economies की वजह से difference आ रहा है। Now let's see the US balance of trade over time. Blue line जो top line है that represent US imports, and the bottom line that represent US exports. It is quite evident from this graph कि आपकी जो imports हैं they are higher than US exports. What happens when your imports are higher than your exports? We have discussed it कि जब आपकी imports exports से ज़्यादा होती हैं तो country trade deficit face कर रहा है. In this case, country which is US is facing trade deficit. Let's move on to the other concept, which is trade agreements. Many agreements have been made to reduce trade restrictions. We discussed it कि different regions में trade barriers को कम करने के लिए different types के trade agreements हुए हैं. For example, in 1988, US and Canada signed a free trade agreement or pact. North American Free Trade Agreement, which is NAFTA, was signed between different economies. Latin American economies also got benefit out of it, and that involved an agreement between Canada, Mexico and US. और जो objective था इस trade agreement NAFTA का, that was to reduce the trade limitations or trade barriers तो Latin American countries को facilitate किया जा सके for foreign trade. और इस ट्रेड पैक्ट के बाद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने
काफ़ी बेनिफिट्स लिए फ्रॉम द अदर कंट्रीज बिकॉज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई, ट्रेड बैरियर्स कम हो गए और बेनिफिट्स लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को मिलने शुरू हो गए. General Agreement on Tariffs and Trade, which is GATT, for 117 nations. 117 countries ने इस agreement को sign किया to facilitate their international trade. ये economies क्यों prefer कर रही हैं इन agreements को sign करना? Because they know it that to survive in this world now, they have to have their international trade, to grow their international trade, and in that regard, they need some facilitation. इन तमाम कंट्रीज को फैसिलिटेशन चाहिए टू बूम विद देयर इंटरनेशनल बिजनेसेस, और अपने इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रो करने के लिए दे नीड टू हैव सम टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट वेयर डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए आपके ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जा सके. We also discussed Single European Act and the European Union in 1990s कि 1990s में यूरोपियन यूनियन को एग्जिस्ट करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि यूरोपियन कंट्रीज को फैसिलिटेट किया जाए फॉर देयर इंटरनेशनल बिजनेसेस, कि जब यूरोपियन इकोनॉमीज मिलकर एक यूनियन ज्वाइन करेंगी और सिंगल करेंसी के साथ मूव करेंगी, सो दे विल बी फैसिलिटेटेड फॉर देयर इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ ट्रेड एग्रीमेंट्स की तो हमने बात की कि डिफरेंट इकोनॉमीज ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं टू बेसिकली फैसिलिटेट देयर इकोनॉमीज और फैसिलिटेट डिफरेंट कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. लेट्स डिस्कस कि ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स कब होते हैं. ट्रेड एग्रीमेंट्स तो वो हैं जो कि आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं. ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स क्या है? बाय विच यू आर रिलक्टेंट टू डू द बिजनेस इन अदर फॉरेन कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, without tariffs and quotas, governments seem always able to find strategies that can give their local firms an edge in exporting. So obviously हर country की government का एक objective है कि जो उनकी local governments है, local जो आपकी firms हैं, they should export more. If the job prospects of people are affected, अगर तो आपके country में jobs कम हो रही हैं due to international trade, तो वो लोग जो कि उन जॉब्स को खत्म होने की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी. सो ट्रेड डिसएग्रीमेंट आ जाता है उन जगह पे जहां पे आप इंटरनेशनल ट्रेड को अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, जब आप उन एग्रीमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपकी कंट्री में जॉब लॉस हो रहा है. पीपल आर गेटिंग जॉबलेस. उस जॉब लॉस को कम करने के लिए आपकी इकोनॉमी में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे. सो दैट इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, कि आपको अगर तो किसी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से लॉस हो रहा है, सो दैट इज अ डिसएग्रीमेंट. On the other hand, there are people who are in the favor of free trade because it increases competition. So there are two different school of thoughts, or there are two different categories of people. One, those जिनकी जॉब्स जा रही हैं ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस एंड दे आर वरीड फॉर देयर फ्यूचर. सो उन लोगों से अगर आप उनकी राय लें, सो दे आर अगेंस्ट इंटरनेशनल बिजनेस or international trade. However, on the other hand, there are categories of people who are basically in favor of international trade because they think internationalization से या international business से या international finance से आपकी economy में growth improve होती है because आपकी country में competition increase हो रहा है. What else can be part of trade disagreement? Firms in one country are not subject to different environmental and labor laws. हर country के environmental और labor laws different हैं. So obviously if आप किसी और country के साथ काम कर रहे हैं या business कर रहे हैं, so आपके trade laws या आपके environmental और labor laws will be different from the other country. That can create a conflict and that can also be under the category of trade disagreement. Firms in one country may allow to bribe while in other country bribing is not allowed. So obviously जब आप internationally move करते हैं या फिर international business करते हैं, so laws and regulations are quite different in different countries, जो कि आपके existing setup से बहुत different है, and there is a possibility that you will face conflict of interest over there. Dumping is involved in few countries where export products are produced with the help of government subsidies.
सो दिस इज अनदर क्राइटेरिया जहां पे गवर्नमेंट्स आपको हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट, और उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट्स सब्सिडीज देती हैं. टैक्स ब्रेक्स फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो ऑफर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. नाउ वन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच इज आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, that is the technology support of computer system, for example by US to India where labor costs are low. In this case basically US outsource कर रहा है because they want cheap labor in IT sector या technology में, और वो computer system पे basically services लेना चाह रहा है from India. So technology support of computer system by US economy from India, जहाँ पे लेबर कॉस्ट्स बहुत लो हैं, तो बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमी आउटसोर्स कर रही है. इट विल इफेक्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड सिंस सर्विसेज परचेज्ड इन अनदर कंट्री. अमेरिका ने आउटसोर्सिंग कर दी इन इंडिया और सर्विसेज परचेज कर ली हैं फ्रॉम इंडिया. ऑब्वियसली वो सर्विसेज फ्री नहीं है और अमेरिकन इकोनॉमी को इन सर्विसेज के अगेंस्ट पे करना होगा. जब अमेरिकन इकोनॉमी इन सर्विसेज के अगेंस्ट पे करेगी, दैट विल बी द कैश आउटफ्लो. It will allow MNCs to produce or to operate in other countries at lower costs. We have discussed कि American economy या US economy why they are getting the support or the services from Indian economy, क्योंकि वहाँ पर लेबर्स चीप हैं. लेबर अगर चीप होगा तो ये आपके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को अगेन इट्स गिविंग यू एन एज कि आपके ऑपरेशंस लोअर कॉस्ट पे आप अचीव कर लेंगे. मे बी अगर आप सेम टाइप की सर्विसेज अपने ही कंट्री में यूज करना चाहें, दैट इज एक्सपेंसिव क्योंकि आपकी लेबर कॉस्ट्स बहुत हाई हैं. However, it shifts jobs to other countries. Again comes the same concept. Although you are getting cheap labor from the other countries, लेकिन आपकी इकोनॉमी में जो लोग जॉबलेस हो रहे हैं due to outsourcing, they will be creating a conflict and they will be against this international business or international services, achieving those international services. Because due to having those international services from Indian economy, US economy में जो लोग same job perform कर सकते हैं वो इस वक्त jobless हैं. So this is criticized by those people who are jobless in American economies because they say कि अगर आप same services American economy में रहने दें so outsourcing नहीं होगी और people will not get jobless. However, on the other side, the point of view of the government or the international business is कि they are getting cheap services or cheap labor in India, so that's the reason that they are outsourcing for this. So there are 2 points of views. One is in the favor of this and the other one is against the outsourcing. So let's start with the overview of this lecture. First of all, we discussed what is balance of payment. That is the accounting of transactions, how you record your transactions, incoming and outgoing transactions. So balance of payment, what is balance of payment? That when you are recording your transactions, these are your accounting transactions. It involves 2 major categories, although there are different categories, but the major categories that are of concern are आपके current account और capital account. Current account में क्या आता है? First thing, this is your purchase summary. Current account के head के अंदर further 3 categories में divide किया गया है. फर्स्ट वन है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पे आपके बेसिकली आप वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को डील कर रही हैं, कि आपने कितनी इंपोर्ट्स की हैं और कितनी एक्सपोर्ट्स की हैं. से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से यूएस में आपने कितने इंपोर्ट्स किए हैं और पाकिस्तान ने यूएस से को कितने एक्सपोर्ट्स किए हैं. दैट टर्म्स और दैट वैल्यूज शुड बी कोटेड अंडर द हेड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान any international business, how much you have imported and how much you have exported to US will be recorded under this. Second one जो आपका factor है, that is under the current account is factor income. Factor income में basically you record your cash inflows और cash outflows को check करते हैं कि आपके पास कितने कैश इकोनॉमी में आ रहा है फ्रॉम द फॉरेन इकोनॉमी और कितनी पेमेंट्स आपने करनी है टू द फॉरेन इकोनॉमी. फॉर दिस वी हैव डिस्कस्ड द एग्जांपल ऑफ यूएस इकोनॉमी, जहां पे हमने एक
टेबल के थ्रू आपको बताया कि यूएस इकोनॉमी से कितना ट्रेड हुआ है, कितनी एक्सपोर्ट्स हुई हैं, एक्सपोर्ट पेमेंट्स कितनी हैं, इंपोर्ट पेमेंट्स कितनी हैं और एक्सपोर्ट इनकम्स कितनी हैं. फैक्टर इनकम will record those things. Transfer payments, any aid, gift or grants will be recorded under this head. We discussed the other category, which is your capital account category, and this basically records the flow of funds from one country to the other. Now capital account can be subdivided into 3 more categories, जिसमें आपके पास direct foreign investment है. What is direct foreign investment? In this category we discussed कि आपके पास basically you invest into the fixed assets in any other country. So if you are investing in any other country in the fixed assets to expand your plant, or you are going to go for any kind of acquisition, that will come under the head of direct foreign investment. The second category is portfolio investment. There are 2 important things to always keep in your mind. One thing, when you are talking about the portfolio investment, so this is not something which is dealing with merchandising या फिर जो कि आपके प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स को डील कर रहा है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग व्हिच इज डीलिंग विद ओनली फाइनेंशियल एसेट्स. सो जितनी भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रही है दैट विल डील विद योर फाइनेंशियल एसेट. वन थिंग. दूसरी चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए दैट इट रिकॉर्ड्स ओनली लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस जो कि 1 ईयर से ज्यादा की होंगी. So all those transactions which are taking place for long term basis will be recorded under the portfolio investment, and all those financial transaction या financial assets में जितनी आपकी investments हैं, it can include the dividends and interest payments or receipts, and that will cover under the head of portfolio investment. Third category is your capital investment. Now what is capital investment? Capital investment is something on which you are dealing with financial assets on short term basis. जो आपके money market instruments हैं, they will come under the head of capital investment. Then we also discussed 2 more things, which are trade agreements and trade disagreements. NAFTA, GATT, EU, all these are the agreements which are made in different regions to facilitate different economies for their international trade. For example, NAFTA facilitate Latin American countries कि Latin American countries में से trade barriers को reduce कराने के लिए NAFTA agreement sign हुआ between Mexico, Canada and America. GATT is signed by 117 economies. अब उस 117 economies ने ये agreement क्यों किया? Because they want to promote their international trade. So वो trade agreements sign करते हैं to reduce their trade barriers. Third and the last one which we discussed was the European Union, in which we continuously focusing on why European Union was formed. The basic objective was to unite the European economies, कि European countries को एक जगह लाकर उन सब से उनको facilitate किया जा सके for their international trade. उसके लिए उन्होंने 2 steps, major steps जो लिए. One thing, the formation of European Union. Second, introduction or inception of Euro currency. एक करेंसी के थ्रू उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को रिड्यूस कर दिया या एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज दे आर डीलिंग विद वन फॉरेन करेंसी एंड दैट इज यूरो. एनी ट्रेड बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज विल बी डन विद द यूरो. सो इन दैट केस यूरोपियन इकोनॉमीज आर ट्राइंग टू अवॉइड द एक्सचेंज रेट रिस्क. Then trade disagreements, that can be done due to different things. If the government is giving you different quotas for specific sectors, or tariffs they are imposing, or any international business that is creating job loss in your economy can be a point of conflict, and that can create trade disagreement. We also discussed that different countries are having different rules for their international trade. Obviously, in Pakistan, if you consider, child labor is quite common. तो अगर आपने इस पाकिस्तान में कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, so you know it very well कि child labor को यूज़ करके आप वही प्रोडक्ट बहुत cheap rates में प्रोड्यूस कर सकते हैं. However, in developed economies, say for example UK या अमेरिका, वहाँ पर child labor completely ban है. In that case, when US will work with you, there is a possibility कि American economies आपसे expect करें that you should not involve any child labor for the production of that product.
इस केस में ऑब्वियसली आपको अगर चाइल्ड लेबर नहीं इन्वॉल्व करना और आपको नॉर्मल लेबर से काम लेना है, मे बी इट इज अ बिट एक्सपेंसिव, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास ट्रेड डिसएग्रीमेंट आए. आउटसोर्सिंग इज अनदर फैक्ट विच वी हैव डिस्कस्ड कि अगर तो आप फॉर एग्जाम्पल किसी सर्विस को किसी दूसरे कंट्री में आउटसोर्स कर रहे हैं, आपको आईटी सर्विसेज चाहिए एंड यू आर आस्किंग अनदर कंट्री से एनी कंट्री इन यूरोप और इंडियन इकोनॉमी फॉर दोज सर्विसेज, सो ऑब्वियसली आपको उन सर्विसेज के अगेंस्ट एक चीज आपको पेमेंट्स देनी है. सेकेंड थिंग, आप जो इंपोर्ट्स ले रहे हैं उनसे उनकी सर्विसेज की, उसके अगेंस्ट आपके अपने इकोनॉमी में वो लोग जो सेम सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो जॉबलेस हो रहे हैं. सो इन दैट रिगार्ड वो लोग जो जॉबलेस होंगे, दैट कैन क्रिएट अ ट्रेड डिसएग्रीमेंट.